welcome back to my channel. Today I'll be sharing my very amazing travel experiences with you. In 2023 I had the opportunity to travel 6 different countries and I'll be sharing my travel experience with you in this video, so keep watching the video and watch the video till the end. एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर द लेटेस्ट वीडियो एंड क्लिक द लाइक बटन एंड हिट द बेल आइकन. ये मैंडेटरी होता है बोलना, तो मैं वही बोल रही हूँ. एंड मैं एक और आपको चीज़ दिखाऊं. आप बोलोगे कि मैं वही बार बार अपना बैकयार्ड दिखाती रहती हूँ, बट नहीं, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ. ये दिन के 3 बज रहे हैं एंड मैं आपको सच्ची बताऊं, अभी मई चल रहा है, हम बाहर जाते हैं ना, हमें जैकेट्स डालनी पड़ती है. तो क्लाइमेट चेंज ने तो बैंड बजा दिए ब्रो. विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गो टू द वीडियो. First, I started my journey from South Korea in February. There I took a Emirates flight and I made my way to UAE, where I visited Dubai. And if you're planning to visit Dubai, here are 5 popular attractions that you shouldn't miss at any cost. First popular attraction is Burj Khalifa, the tallest building in the world, and the ticket price was 3,300. Second popular attraction is Dubai Mall. This is the one of the largest shopping mall in the world and ये इतना बड़ा है कि फुटबॉल की 50 ग्राउंड्स के बराबर है. थर्ड पॉपुलर डेस्टिनेशन इज दुबई फाउंटेन. ये स्टार्ट होता है शाम के 6 बजे से. उसके बाद हर 30 मिनट्स में फाउंटेन शो होता है. मैं हर डेस्टिनेशन के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगी. और फोर्थ डेस्टिनेशन इज डेजर्ट सफारी. It's a must do. It's an amazing experience you can have ever in your life. Ticket price was 5,000 per person. Fifth popular attraction is Eye in Dubai. ये लंदन्स आई के रेप्लिका जैसा है. बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था. टिकट प्राइस 2,900 पर पर्सन एंड ये ब्लू वाटर आइलैंड में बना हुआ है. Next, I traveled to Switzerland, where I currently reside. Switzerland is a country known for its beautiful nature and landscape. If you're planning to visit Switzerland, here are 5 popular attractions that you should definitely check out. First popular attraction is JUNGFRAU. This is the highest railway station in Europe. The ticket price is 21,500 per person and ये top पे आता है, पूरे यूरोप का टॉप है ये. सेकेंड पॉपुलर अट्रैक्शन इज मैटरहॉर्न, वन ऑफ द हाइएस्ट माउंटेन इन द एल्प्स. फ्री टू सी फ्रॉम द डिस्टेंस बट यू नीड टू परचेज अ टिकट फ्रॉम द केबल कार और ट्रेन टू गो अप. अगर आपने टोबलरोन खाई हो तो उसमें जो पैकेजिंग पे माउंटेन बना होता है वो वही है. थर्ड पॉपुलर अट्रैक्शन इज लेक जेनेवा. इट्स सराउंडेड बाय स्टनिंग माउंटेन एंड इट्स फ्री टू विजिट. फोर्थ पॉपुलर अट्रैक्शन इज शिलोंग कासल. बहुत ही मेडिवल कासल है, 11th सेंचुरी का. लेक जिनीवा के सराउंडिंग्स में है और टिकट प्राइस है इसकी 1100. फिफ्थ पॉपुलर अट्रैक्शन इज राइने फॉल्स. इट्स द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन यूरोप. द एंट्री इज फ्री बट इफ यू वांट टू टेक अ बोट यू हैव टू पे फॉर इट. अगेन मैं अपने सारे डेस्टिनेशंस के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो कीप वॉचिंग माई चैनल. Next country I visited to was France. I visited Paris and here are 5 popular attractions. First popular attraction is Eiffel Tower. The ticket price is 2,600 per person. The symbol of Paris. And this is 136 years old. Third popular attraction is Louvre Museum. This is the one of the largest art museum in the world. The ticket price is 1,560 rupees and this is the most visited museum in the world as well. Next attraction is Disneyland, one of my favorite attraction till now. 30th anniversary चल रही थी और the ticket price was 9,500 per person. Next destination is Montmartre. It's famous for its artistic feature. The entry was free and it's a separate district from Paris. Next popular attraction is Seine River Cruise. It's a very easy way to see the city. The ticket price was 1,400 per person. Later in September, I visited my home country, India, and spent some time with my family.
आई डेंट डू मच साइट सीइंग बिकॉज आप घर जाते हो तो क्या ही करते हो. मैंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया फैमिली के साथ. हम 4 लोगों के बर्थडे एक साथ थे. मेरी दीदी का, फिर मेरे हस्बैंड का, फिर मेरे पापा का पड़ रहा था, फिर मेरा पड़ रहा था. हम चारों ने एक साथ ही सेलिब्रेट किया. अब ऑफकोर्स अब घर जाए मैं किसी से नहीं मिल पाई, ना मैं अपने दोस्तों से मिल पाई. बस आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली एंड आई थिंक इट वॉज द बेस्ट थिंग आई वुड डू. हम सब बर्थडे सेलिब्रेट करने हम GT रोड गए थे. The next country I visited to was Italy. Here are 5 popular attractions. First is Colosseum. Colosseum is an ancient amphitheater and one of the most iconic landmark. Ticket price is 1500. Next popular attraction is Trevi Fountain. यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है. एंट्री फ्री है और ये 261 year old fountain है. Next destination is Pompeii, which is preserved 6th century Roman city near Naples. The ticket price was 1500, which was ruined by a nearby volcano eruption. The next destination I went to was Naples. And मैं सही बताऊँ, Naples में सिर्फ और सिर्फ पिज़्ज़ा खाने गई थी. This is the most famous pizza in the world. The restaurant is visited by Julia Roberts. The next destination I visited to was Venice City. It is also known as the floating city. The gondola ride ticket was 7,300 and the whole city is made of water canals. बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है यहाँ. Finally, I traveled to Vatican City, the smallest country in the world and one of the most unique destinations that I ever visited. In a separate video, I will tell you all about the unique things that I discovered in Vatican City. So that's it for now. I hope you enjoyed hearing about my travel experience, found some inspiration for your own travel. Don't forget to like, share and subscribe to my channel.